ખેડાથી સમાચાર આવી રહ્યા છે, જ્યાં વકફ બોર્ડ મામલે જગતગુરુ સદાનંદ સરસ્વતી મહારાજે નિવેદન આપતા કહ્યું કે સંવિધાનમાં વકફ બોર્ડની કોઈ જોગવાઈ નથી। વિશ્વના કોઈ દેશમાં વકફ બોર્ડ નથી। જે મુસ્લિમ દેશો છે ત્યાં પણ વકફ બોર્ડ નથી। છેલ્લા 71 વર્ષમાં મુસ્લિમ સમાજના વિકાસ માટે શું કાર્ય કર્યું તેવા સવાલ ઉઠાવ્યા। આ બધું એક ઢોંગ છે। વકફ બોર્ડ રદ થવું જોઈએ। जो हिंदू भाइयों की संपत्ति पाकिस्तान में थी वो हिंदुओं को प्राप्त नहीं हुई, तो वक्फ बोर्ड का विधान कहाँ से हुआ है? संविधान में तो ये भी कोई जोगवाई है नहीं वक्फ बोर्ड की। और विश्व के किस देश में वक्फ बोर्ड है? जो मुस्लिम देश हैं वहाँ है क्या? वक्फ बोर्ड का उपयोग क्या है? समाज के लिए, देश के लिए क्या योगदान है? तो मुस्लिम समाज के उद्धार के लिए वक्फ बोर्ड ने कौन सा कार्य किया है अभी तक 78 साल में? और संविधान का पालन सभी कर रहे हैं, तो उनको भी संविधान का ही पालन करना चाहिए। शरीयत से देश नहीं चलेगा।